Good afternoon, everyone. Let me know if I am audible. Am I audible? Very good. Thank you. So, let's see what we can do today. Okay. Let's see what is happening in the market. कौन सी stocks है जो positive है आज? And what opportunities are we getting over here? So, rights is interesting. Rights ka, if we go to the weekly chart, rights weekly chart is looking good. रिवर्सल है यहाँ पे. I think this level is looking good, and there is a recovery from here. So I think this level is holding good. Okay, and this is a very good. This thing is also very good. See, rights is good, looking good. So I think if rights breaks above this 215 level, 232 is possible in the short term. अच्छा momentum है. Volumes is also looking good this week, so we can see a good up move. Let me enhance this. Yeah, so 230 is possible. See, and a stop loss of this thing. This will be a very good trade. $198, stop loss of 198, and we can look for 230, a very good swing. I'll enhance the let's see. Yes, rights you can see here is looking very good. On weekly charts also it is looking very good. Tell me, what do you want to see today? What do you want? Any queries? Nifty, what is happening on 5 minutes chart? Let's go and see. Yes, so this is
Nifty is looking range bound, but I think Nifty will rebound from here. लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, देखिए यहाँ पे दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर. ये जो रेड कैंडल है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक. ओके, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर निकल जाना चाहिए निफ्टी को. एट द बेस्ट it might come down here and again move away from here. If we open the CPR, yes, एकदम exactly dot CPR से move आ रहा है. अगर liquidity sweep करके ऊपर निकलता है, then I think we can look for our day high and beyond. नीचे गिरेगा, then I think this level is very important. 332 levels are very important. If Nifty breaks below 332, then we can look for short for at this level. This is this thing. But I think यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए मार्केट को. जो अपमूव आता है ना, उसके पहले जो एक रेड कैंडल रहता है, इफ इट्स वॉल्यूम इज बेटर देन द प्रीवियस रेड कैंडल वॉल्यूम, तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है. जैसे यहाँ पे बना एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना यहाँ पे, एंड यहाँ ये, एंड एक यहाँ पे था ऑर्डर ब्लॉक. ये डीप ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से रिवर्सल लास्ट टाइम आया. सो हो सकता है कि इस बार रिवर्सल यहां से आ जाए, कि पूरा रिट्रेस पूरा यहां तक ना आए. और अगर मार्केट में सेल ऑफ आता है, देन 330 के नीचे ही सेल ऑफ आएगा. अब मजा आएगा ना ट्रेड में. How is Suzlon? Suzlon is not for Suzlon is not for normal things. Okay, I mean normal swing trade या ये सब के लिए नहीं है. Suzlon, if you are willing to invest your 5 years, next 5 years, you can go with Suzlon. I'll show you the charts. It is one of my favorite stocks. Okay, Suzlon. So I'll just close the CPR and then let's go for Suzlon. Suzlon के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वीकेंड पे बनाऊंगा. So by midweek or by next weekend you will get that video. Suzlon detailed video valuation के साथ. ठीक है. And Suzlon has said that it wants to double its growth. यहाँ देखिए, यहाँ पे this is what Suzlon is looking like. Extremely good. Okay. यहाँ पे Suzlon का फ्यूचर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आप अगर देखोगे तो Suzlon will not disappoint you. बट आई थिंक एक काम कर सकते हैं आप लोग. If you are an investment minded person in the stock market, okay, if you are an investment mindset, if you have an investment mindset in the stock market, I have opened a new Telegram channel, and that is under the brand of Stocks and Strategies. You can go to the free channel, you can join the free channel, stay there. I share my views of the market, I share stock views,
company views, many news with charts I share over there. You can join that channel, and I've already launched an equity research group. ओके सूजलॉन ना, हाँ सूजलॉन 5 मिनट का चार्ट लगाया, जस्ट सॉरी 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 5 मिनट के चार्ट से ये हटा देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। यस, सूजलॉन का चार्ट तो मैंने शेयर किया है स्टॉक्स एंड स्ट्रेटजीज में भी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा चार्ट है, इट्स अ नाइस चार्ट। इट्स अ नाइस चार्ट, वेरी गुड चार्ट। अच्छा डेवलपमेंट है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है सुजलॉन में। अभी अभी शायद कुछ दिन पहले, इसी हफ्ते में, लास्ट वीक में शायद सुप्रीम कोर्ट ने 2020 या 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020 में कुछ उन्होंने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया था। उसके बाद मैनेजमेंट भी शायद चेंज हुआ है, and there is a fine imposed on Suzlon for 29 crores, but that doesn't impact the business at all. So I think the business is quite good. Okay, please, you can join this Telegram channel, Stocks and Strategies. Later on, going ahead, I'll be launching my own app with Stocks and Strategies. I'll create a community for investors. There will only be positional stock ideas and not any service that I offer on that on that channel, on this channel, will be positional. In fact, positional option selling will be there, positional stock options and futures will be there. I won't be giving any services for index ऑप्शंस, बिकॉज इंडेक्स ऑप्शंस पे कोई फायदा नहीं है। 200-400 रुपए के लिए बेकार में माथा पेची करना पूरा दिन, इट्स एब्सर्ड, एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप लूजिंग योर कैपिटल। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी। अगेन निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देख लिया, 5 मिनट्स अगेन। ये देखो, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, अब देखना पड़ेगा ये चार्ट ब्रेकडाउन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पे यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वी कैन सी अ गुड फॉल अंटिल 290 से लेके 270 लेवल्स तक का। फ्री ग्रुप में मैंने वो भी दिया था मेरे ख्याल से, अभी ये वाला दिया था ना, 500 PE दिया था। So 500 PE is doing very good. It is at 195. यहाँ पे नीचे आया था एक बार, 144 के पास आया था। I gave it at 145 to 150. So यहाँ पे 204 का हाई लगा दिया इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी। Okay, let's see. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी था ना आज, इसलिए गिर रहा है मेरे ख्याल से। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन टू फंड ऑल फ्यूचर इंटरनल एक्विवल्स एंड डेट फाइनेंसिंग। ओके, सो TCS is falling, NMDC is falling, TCS is falling, JSW Steel is falling. Let's look at JSW Steel. JSW Steel यहाँ पे देख लेते हैं। JSW Steel
हाँ, यहाँ पे अच्छा फॉल आ रहा है। लेट्स गो टू 30 मिनट्स चार्ट। लेकिन यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस सपोर्ट भी है बहुत अच्छा यहाँ पे। So the whole area is, this whole area is सपोर्ट जोन, नो ट्रेडिंग जोन। इसके नीचे हम लोग देखेंगे, इसके नीचे यहाँ तक आ सकता है मार्केट 1248 तक। दिस 1245 तक आ सकता है। दिस अ गुड एरिया टू शॉर्ट। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला जाएगा। सो लेट्स गो टू TCS नाउ। TCS में भी मूव अच्छा आ रहा है। 30 मिनट्स, यस, ब्रेक डाउन। ये इसका एक्चुअल सपोर्ट, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है TCS में। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। TCS में 2200 P। You switch to 5 minutes chart now. Okay, I'll do. How do we ensure whether it stops at that order block or still you have to give? I made a mistake today in the premium group, so you need to allow the like the candle to complete. Okay. सो हियर यहाँ पे देखो TCS का एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, TCS कैन गिव अ वेरी गुड ट्रेड। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा 2200 P देख सकते हो। इफ वी गेट 2200 P, you can close this, you can close this, you can close this, you can close this, close. Okay, 22 TCS 2200 P. If you go for it, then it is at, so let me put my pivots in place. Let me check. So 2200 यहाँ से पॉसिबल है। यहाँ पे देखते हैं, हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, TCS आई थिंक इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। 63.75 के ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। एंड विल कीप अ स्टॉप लॉस हियर। ओके, इस कैंडल के नीचे, ये वाला जो कैंडल है इसके नीचे रखेंगे स्टॉप लॉस। ये यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग। ठीक है, 59.75 और बिलो दैट। सो यहाँ पे TCS में अगर देखेंगे, TCS में एंट्री बन सकता है 63.75 के ऊपर। और TCS का सबसे खास बात है कि TCS एकदम स्मूथ वो देता है, मूव देता है, जेन्युइन मूव आता है TCS में। $2200 P हम लोग लेंगे यहाँ पे। So our first target will be TCS at 2200, and then we'll keep on this thing, trailing SL. देखो अपना, अब हम लोग कैंडल कंप्लीट करने के लिए दिए थे ना, अभी तक हम लोगों का जो है ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ। इसीलिए जो भी मेजर सपोर्ट है, रेजिस्टेंसेस है, उस पे कैंडल कंप्लीट करने देना पड़ता है। क्योंकि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप होता है।
और इस पे चले जाओ, निफ्टी पे चले जाओ, देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। ये देखो एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक से मूव कर रहा है, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट ले रहा है, ये बना के रखा था, ये ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट ले रहा है। ये देखो, ये दिस वाज येस्टरडेज ऑर्डर ब्लॉक, ओके, दिस वाज येस्टरडेज ऑर्डर ब्लॉक, and nowadays it is very difficult to trade in index. ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक मेन है, एंड इफ दिस ब्रेक्स, मुझे लगता है यहाँ से अच्छा डाउनफॉल आ जाएगा, यहाँ से अच्छा लिक्विडिटी स्वीप ले रहा है, यहाँ पे सारे सेल साइड ऑर्डर्स है इनका, तो ये लेके ऊपर जा सकता है, एंड दिस मूव विल बी वेरी बिग मूव अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव देता है तो। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से लास्ट टाइम मूव आया तो यहाँ से आया, इतना बड़ा मूव आया, तो इस बार भी हो सकता है ऐसे। So TCS still not activated. Let's see for some time more. और देखते हैं श्री सीमेंट्स गोइंग डाउन, केन्स में आजकल वॉल्यूम नहीं रहता है, ट्रेड करके फायदा नहीं है। Anybody in Nifty want to go long? You can try above this level, okay? यहाँ ऊपर से आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो, इसके ऊपर से, इसके ऊपर से एंट्री ले सकते हो। और इफ यू वांट टू एंटर नाउ इट विल बी अ बिट रिस्की, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। मुझे लगता है यहाँ से एक तो पुल ऊपर की तरफ आना चाहिए, बट यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं होगा, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ऑल्दो द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड। यू कैन लुक फॉर 400 सी, देख सकते हो आप 400 सी देख सकते हो, यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा 346 के नीचे। बट वो स्टॉप लॉस हिट करने आएगा, यहाँ रिस्की हो जाता है, इसके ऊपर ट्रेड लेना कभी भी। Vijaya Diagnostic, okay, let's go to Vijaya Diagnostic, okay. You want a long-term view, Rohan 8527. Do you want a long-term view on Vijaya Diagnostic, or you want a short-term swing trade view or intraday view? See, 23,400 C is looking good. Long-term view, if you go, I'll close these everything. Rohan, do you want a long-term view on this thing, Vijay Diagnostics? Yes, looking very good. Broken above, I think, all-time high. So monthly chart is looking good. Yes, extremely good chart. Very good momentum. Very good momentum. But please keep in mind that Vijay Diagnostics is a very volatile company. Okay, the price is remains fluctuating too much. If you are a long-term investor, stay invested. You can accumulate this also. Your stop loss will eventually be at 862, and you can look for higher targets. If you want to set the target, you can use the pivot points. So 1560 and 1850, 1845. You can actually set a target
for 1845 over here in the near future. So keep an outlook of 3-2. Thank you. So swing, you can take the monthly low, okay? Swing you can take month low, that is 1224. Below 1220 you can exit over here, okay? Swing, and your target will be 1560. 1560. If you take swing weekly, yes, 1560 looks good, and your stop loss will be here. Here 1200, 1220, you can keep your stop loss, okay, somewhere around here, and your target should be here. So you can put your target here. So it's a good risk to reward condition over here. Okay. Bajaj Housing Finance. Bajaj Housing Finance is a very good stock. It's a wealth creator. You can stick on to it any time if you want. But I'll show you the chart, okay? TCS. Okay, TCS. This is TCS. Okay, TCS got activated. 64 is the high. So 59.75 is our stop loss. It goes below this, no point staying on the trade. Staying on the trade. 60, you said Bajaj Finance, right? Bajaj Housing Finance. Bajaj Housing Finance is a long-term stock. Bajaj HFL. Okay. Bajaj HFL. So this is a 5-minute chart. You want a long-term view on Bajaj Housing Finance or? Swing trade view. See, 20 weekly EMA is a big resistance for this stock right now. Okay. 20 weekly EMA के ऊपर कुछ बात बनेगा. And if you check this Fib retracement, यहाँ पे Fibonacci का अगर देखोगे तो it is a good place. You can expect it to rebound from here. ठीक है. यहाँ पे एक वो भी है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, ये जगह पे. ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट देगा. ओके, दिस एरिया इज अ गुड सपोर्ट फ्रॉम हियर. सो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है. दिस कैन बी योर, इफ यू आर गोइंग फॉर स्विंग, then this below this should be your like last cutoff rate, 78 point something. 78 should be your cutoff rate, and your target can be 93. This is this high, 93. This is a swing trade opinion. Okay, this is not short like long term opinion. Long term opinion is my quite okay with it. If you want to hold it, you can hold it. For next 10 years, if you want to hold it, you can hold it. I think TCS में stagnation है यहाँ पे. TCS अगर देखेंगे तो यहीं पे रुका हुआ है TCS. TCS का ट्रेड तो एक्टिव हुआ है. लोअर लोस तो है TCS में. अगर इसके ऊपर चला जाता है देन वी हैव टू एग्जिट. ओके, ब्रेकडाउन तो है, क्रूशियल सपोर्ट से ब्रेकडाउन तो है. सिरमा SGS टेक्नोलॉजी. ओके,
सिरमा, SGS टेक्नोलॉजी, सिरमा, ओके, सिरमा, 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 यू वांट व्हाट? लॉन्ग टर्म व्यू? बहुत अच्छा चार्ट है। सिरमा SGS is a very good this thing. Yeah, higher highs, monthly higher highs. It is overbought लेकिन ओके, अगर अभी एंट्री लेना चाहते हो देन डोंट एंटर नाउ, ओके, यू हैव टू वेट पेशेंटली। अगर हम लोग वीकली चार्ट्स पे भी जाएंगे ना तो आई थिंक इट इज, ले सकते हो यार एंट्री, अगर 2-3 फेज में एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सो माई लेवल इज दिस, ओके, so this is my level, okay, this is the level, okay, यहां से ब्रेकआउट दिया था, यहां से अभी तक रीटेस्ट इस लेवल को किया नहीं है, सो रीटेस्ट इज एट 938, राइट, 938 के आसपास अगर मिले ना तो इसको ऐड करना, अभी एंट्री कर सकते हो टू गेट होल्ड ऑफ द मोमेंटम। अगर मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हो तो मोमेंटम ट्रेड करोगे तो 1308 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 1308 का टारगेट रखना पड़ेगा। इट कैन शूट एनी टाइम, बट यहाँ पे ना स्ट्रेंथ वीक होता जा रहा है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट देखो वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, मे बी देयर इज अ पुल बैक फ्रॉम हियर। अगर पुल बैक आता है, मोमेंटम ही प्ले करना है, देन ये जोन तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जोन तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ एक पुल बैक आए, देन रिवर्सल दिखेगा शॉर्ट टर्म में, मीन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, हाफ एन आवर 1 आवर टाइम फ्रेम में, अगर यहाँ से इफ यू सी अ रिवर्सल देन एंटर अबव दैट रिवर्सल कैंडल एंड योर टारगेट शुड बी 1308 फॉर द नेक्स्ट 1 वीक में आ जाना चाहिए अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो, राइट, ओके, यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 5%, वेरी गुड। अगर आता है ना नीचे तो यू कैन होल्ड ऑन टू इट, यहाँ पे भी नीचे आता है ना तो इसको ऊपर ऊपर लेके जाएगा, ये इसके बाद नीचे आएगा 1180 के आसपास आएगा, देन आई थिंक 1144 टू 1186 ये जो रेंज है यहाँ पे आएगा, तो ये जो ओवरसोल्ड, yes, please like the video and please subscribe to my channel, and you can please join the stocks and strategies channel as well. So TCS में मूव आ गया, ओके, TCS में मूव आ रहा है, योर फर्स्ट टारगेट विल बी 2000 लेवल, ये वाला लेवल आएगा, ठीक है, TCS में मूव आएगा अभी ये रहेगा, ओके, यहाँ पे एक टारगेट बुक हो सकता है अगर सस्टेन होता है तो। TCS का टारगेट ना ये दे रहा हूं 67 है, 74 रहेगा, 67, 74, 72 में भी बुक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से रहो तो ये मिल सकता है हम लोगों को, ये 2 टारगेट्स मिल सकता है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लुक्स गुड, ओके, इसीलिए ट्रेड दिया था बट इट हैज टू शूट। बिकॉज 2000 अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं TCS में, देन TCS 2204 पे है, अगर नहीं भी आता है टारगेट तब भी आपको फर्स्ट टारगेट बुक करना ही है, बिकॉज 2200 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल एक्चुअली। राउंड फिगर वाला जो लेवल्स होता है ना वो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। एंड प्रीमियम भी उतना अच्छा मूव नहीं दे रहा है।
So IT is actually dragging down the market right now. Okay. नियर डे लो, यस। वेट करना पड़ेगा हम लोगों को ना, वेट करना पड़ेगा निफ्टी का। वेट कर लो आप। ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल पे आ गया है। यहाँ से हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिलना चाहिए, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ के नीचे जाना चाहता है कि ऊपर ही जाएगा वो। लेट्स सी इफ वी आर गेटिंग एनी। सो एमसीएक्स इज ऑल्सो, इंडेक्स में पता है मजा नहीं है आजकल। इंडेक्स में टू मच ऑफ दिस थिंग बोल सकते हो। हाँ, ये दिस आई एम सेंडिंग अक्रॉस द टेलीग्राम चैनल लिंक। This is only for positional trades, whether it be option selling, whether it is equity, or whether it is stock options and futures. So there will be no intraday trading over here. So I'll be sharing the paid group links also in the free group over here. As of now, I have opened the equity research premium group. So I have also shared the last few months research reports where we have made good profits. Very rare stop losses that we are not included. Very rarely we have exited a trade, but overall we have stayed profitable in the equity group research, at least research part. ये देखो यहाँ पे जा रहा है ये मार्केट। अभी डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर खींचेगा कि मार्केट नीचे लेके जाएगा, दैट इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। टीसीएस में नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस अगर 2200 लगा देता है तो देखो ये टीसीएस काम ही नहीं कर रहा है, प्रीमियम्स मूव नहीं कर रहा है ना। अदरवाइज वी वुड हैव गॉट एटलीस्ट 65 66 तो चला जाता। यहां से 2206 से वी केम डाउन टू 2203, स्टिल वी डिडंट हैव एनी दिस थिंग इन प्रीमियम्स। और अभी तो इतना ही है हम लोगों का। देखो फिर वही ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी स्वीप आ रहा है, सेम। इसीलिए बोलता हूं हमेशा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। मार्केट को अगर टाइम देते तो हमें क्लियर पिक्चर एक मिलता है। कितना टाइम हो रहा है? अभी भी 3 मिनट बाकी है इसमें। सो विल स्टिल वेट, ओके, विल स्टिल वेट करेंगे। यहाँ से ऊपर जाना है मुझे लगता है मार्केट को। मार्केट गिरना होता तो गिर चुका होता, वैसी गिरी हुई है। ये इस कैंडल में अगर तोड़ता है ना, अच्छा तोड़ेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है यहाँ पे। इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। ये वॉल्यूम ना यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आ रहा है 5 मिनट के कैंडल में। सो यहां से तोड़ता है इस कैंडल पे तो अच्छा गिरेगा, लेकिन अगर उठाता भी है देन इट विल बी अ सिग्नल कि ऊपर जा सकता है मार्केट। टीसीएस इज नॉट मूविंग यार, लोअर लो लगा रहा है लेकिन
काम नहीं बन रहा है इसका। टीसीएस देखो कहाँ चला गया, टीसीएस 2202 पे आ गया। यहाँ हम लोगों को मूवमेंट ही नहीं मिल रहा है। $2200 if it approaches, book first target whatever rate the premiums are available in. निफ्टी तोड़ दिया, ले लो। नहीं तोड़ा, देखो कायदे से देखा जाए ना, टीसीएस शुड बी कमिंग डाउन टू करीब 2190 2117 लेवल्स तो आना चाहिए टीसीएस में। काफी वीक हो गया है टीसीएस, बड़ी आज प्रीमियम्स का मूवमेंट नहीं है इसमें। गया ऊपर मार्केट, वहां से खींच लिया ऊपर। यस, अभी मैं समझाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ये जो था ना, ये जो इंड्यूसमेंट कैंडल था ना, ये जो इंड्यूसमेंट कैंडल था, रेड कैंडल, ये अभी और ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। ये अभी ऑर्डर ब्लॉक बन गया बिकॉज इसमें देखो वॉल्यूम्स भी अच्छा आया था एंड लोगों ने शॉर्ट भी किया। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है एंड ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है। सो क्या हुआ, यहाँ इस ब्लॉक में सेल ऑर्डर्स को कलेक्ट किया इंस्टीट्यूशंस ने और मार्केट को ऊपर पुश किया। सो दिस बिकम्स द ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अगर ऊपर जाता है एंड एक बार इधर आता है तो यहाँ पे बाइंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑफ नहीं आएगा, रिमेंबर, यहाँ पे सेल नहीं आएगा। अगर नीचे आता है तो यहाँ आपको स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बाई करना है। अगर इफ दिस कैंडल सस्टेन्स एंड मार्केट मूव्स अप, थोड़ा सा अप जाने के बाद नीचे आता है, यू विल बाई ओवर हियर। इस लेवल पे बाइंग आएगा एंड इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। ये इस लेवल के नीचे हम लोग यहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। अगर यहां से एक पुल बैक आता है यहाँ पे तो आसपास, यहाँ पे आसपास, यहाँ पे आसपास आता है तो मार्केट मुझे लगता है यहाँ से ऊपर उठा लेगा। और कहाँ हम लोग टारगेट सेट करेंगे, लंबा टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ वगैरह कहीं पे टारगेट नहीं होगा। एक यहाँ पे गैप है, ये गैप को फिल करना कर सकता है शायद। ये देखो पहला टारगेट हम लोगों का अगर यहाँ पे मिलता है तो ये जो ब्रेक, ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने आएगा। ये जो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। मार्केट यहाँ पे बियरिश मोमेंटम में है एंड एक बार ऊपर गया एंड देन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे गिरा। ओके, सो गिरा तो यहाँ जो गैप रह जाता है
उसको दो कैंडल, फर्स्ट कैंडल एंड द थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप रह जाता है, दैट इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट सच में बियरिश है तो यहां से फिर गिर जाएगा नीचे, ओके। अगर ऊपर नहीं जाता है तो यहां से नीचे गिरेगा। अगर मार्केट बुलिश बन जाता है तो इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वेर इज टीसीएस? टीसीएस का देख लेते हैं हम लोग। सी टीसीएस इफ इट कम्स डाउन टू 2200 यू हैव टू एग्जिट, ओके। मतलब फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना है, चाहे किसी भी रेट पे प्रीमियम हो। 65 66 जो भी मिलेगा आपको निकल जाना है, जो मतलब फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना है एंड देन 1 पॉइंट ऊपर हमको ट्रेल करना है। View on Wari Energies. ये Wari Energies is looking very good. Wari Energies तो अच्छा है। Do you have any problems with Wari Energies? रखे रहो ना। Don't think about exiting these good stocks. If you have purchased it at a good valuation, उसको रखे रहो पूरा। Wari Energies, so by looking at what time frame to better understand the Nifty trend, whether up or down. See, intraday I use 5 minutes chart, but as the day progresses, I also use 15 minutes and 30 minutes chart to understand the chart better. These moves better. I'll show you how. See, यहाँ पे एक trend follow हो रहा है वारी का, okay? You can see, right? वारी का एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इफ यू वांट टू एंटर वारी एनर्जीज देन दिस इज द पॉइंट, ओके। दिस ट्रेंड लाइन इज द पॉइंट। इफ यू वांट टू exit, if you have entered here and if you want to exit, you can exit some of your quantity right now if you are a short term trader. If you are a long term trader, no problems with that. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखे रहो आप। वो जो लोग आईपीओ आया था वो छोड़ दिए, वो लोग भी सोच रहे होंगे अभी क्यों छोड़ दिया, ठीक है। ये देखो, ये दिस इज द सपोर्ट की सपोर्ट एरिया। फिलहाल तो जो शेप दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज बियरिश, ओके, दैट इज बियरिश। अगर हम लोग इसको ब्रॉड करेंगे एंड इफ वी see this level, so what you can see is that formation of an inverse head and shoulder pattern, like inverse like head and shoulder pattern, right? ये यहाँ से अगर सपोर्ट लिया है इस जोन में एंड ऊपर गया तो ठीक है, अदरवाइज टेक्निकली गिर सकता है, थोड़ा सा भी बैड न्यूज आया तो, ठीक है। सो वारी एनर्जीज का मैंने दिखा दिया। Okay, let's go to Nifty and see what is happening. Guys, please keep a tab on TCS. 2001 पे है, 2201 पे है, 2200 टच किया तो निकल जाना एक बार, वो फास्ट बाउंस कर जाएगा। यहां से बाउंस आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो 65 वी हैव, थोड़ा सा और 2200 पे आएगा तो निकल जाना। सॉरी, फर्स्ट टारगेट बुक कर दें, बार बार मेरे मुंह से वही निकल रहा है। फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना, यस, बुक फर्स्ट टारगेट, हाँ, बुक फर्स्ट टारगेट 65.80, गुड। फर्स्ट टारगेट बुक करके सेफ हो जाओ। अगर 63.7580 पे लिया है आपने एंट्री, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एक्चुअली में, अभी बताता हूँ,
आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? योर स्टॉप लॉस शुड बी हियर, ठीक है, योर स्टॉप लॉस शुड बी हियर। गुड, अच्छा जा रहा है 66.4। इसमें जो हमने मार्क किया था मेरे ख्याल से आने वाला है 67.10 मार्क किया था। आ गया ना 67.10 मेरे ख्याल से। निफ्टी चार्ट, यस यस यस, ब्रेक डाउन आ रहा है। पुल बैक आने दो, पुल बैक आने दीजिए, एक पुल बैक जाने दो। टीसीएस में हम लोगों का फर्स्ट टारगेट, वैसे जो टारगेट रखा था वो मिल गया, ठीक है, 67.10। नेक्स्ट टारगेट 72 का होगा। एक पुल बैक लेने दीजिए, शॉर्ट करना है तो। एंड अभी भी शायद ये वाला लो हम लोगों ने तोड़ा नहीं है, ये देखो यहीं से कल आया था। ध्यान से देखना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस्ड और नॉट, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखो। ये ब्रेकडाउन कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल है। ओके, इस रेड कैंडल का आप वॉल्यूम देखना, तो इस रेड कैंडल का वॉल्यूम देख रहा है, ब्रेकडाउन कैंडल का है क्या वॉल्यूम? ओके वेट, ये देखो रेड कैंडल का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम है क्या? ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं वॉल्यूम के साथ। इसलिए हम लोग इसको होल्ड करेंगे। 400 ले लो, 400 पी। ओके, अगर इस बार गिरता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे इसको। 400 पी, लेट्स शॉर्ट इट अबव दिस कैंडल, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे हम लोग इसके ऊपर, 180 के ऊपर, 180 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे पी को। 23,400 पी अबव 180, या आप उसको करना चाहते हो 23,350 पी पे लाना चाहते हो तो कम प्राइस में मिल जाएगा। ओहो, सी ले लिया मैंने। 23,350। ओके, पी पे अगर देखेंगे तो पीई यहाँ पे देख लेते हैं। सो 23,350 पी अगर देख रहे हैं हम लोग, तो यू कैन बाई इट अबाउट दिस, ठीक है, यहाँ पे बाई करेंगे हम लोग। 153.25 है ना, और इसका हाई है, डे हाई है यहाँ पे
154.95. So we will buy above 155. 155 के ऊपर बाई करेंगे इसको. और 180 का टारगेट रखेंगे. ठीक है. इफ इट फॉल्स, लेट्स सी. बहुत सारे वो है यहाँ पे, बहुत सारे स्विंग्स, छोटे छोटे स्विंग्स है यहाँ पे. वी विल टारगेट, यहाँ पे हम लोग टारगेट क्या करेंगे, 23,287 टारगेट करेंगे. ठीक है. निफ्टी का 23,287. Yes, active. 23,287 will be our target. Okay. 160, 161, 162, 163, 164, 7. बुक फर्स्ट टारगेट, बुक फर्स्ट टारगेट. थोड़ा सा पार्शियल बुक कर लो. Okay. फिर यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, यहाँ से फिर स्वीप किया. 292 तक आया. हम लोग 287 सोच रहे थे, 292 तक आया. बुक किया ना. कॉल साइड अपॉर्चुनिटी हम भी देखेंगे, लेकिन कॉल साइड अपॉर्चुनिटी क्या है अभी फिलहाल. आई थिंक देर इज टू मच ऑफ सेल ऑफ. I think we got 12 points, right? 155, above 155, and we got 167, right? So we had targeted 287, we got 292. TCS has made a high of 70.85. So our final target was 72. $167 गया था. I went to 167. Did someone book profits or not? We got more than 10 points, like 12 points हम लोग बनाए. उसमें प्रॉफिट बुक किया था कि नहीं? अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ मूव होता है देन वी हैव टू एग्जिट. ओके, वॉल्यूम्स अच्छा है. अगर यहाँ से गिरता है तो अच्छा गिरेगा.
नाउ मूव तो निकल गया, क्यों नहीं बाई किया था? नाउ इट्स टू रिस्की। यहाँ पे एक डोजी बना है यार। देयर इज लाइक यू कैन, इफ यू सी इट्स अ डोजी। ओके, थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो बिकॉज इट ऑलरेडी गेव 167। एकदम से ऊपर भाग जाएगा इफ यू डोंट कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ डोजी बना है एक, एकदम परफेक्ट डोजी बना है यहाँ पे, लॉन्ग लेग डोजी जिसको बोलते हैं। सो यू मस्ट कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और एल्स इफ इट शूट्स अपसाइड प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा प्रॉफिट्स। सो हाई वाज, इसका हाई था 168, हाई था। जनरली आता तो है लोअर लेवल्स को काटने, बट एकदम परफेक्ट डोजी बन गया। ट्रेल स्टॉप लॉस, ओके। हाँ, इफ यू हैव मिस्ड इट देन डोंट एंटर, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बन रहा है। एंड दोज हु आर होल्डिंग इट, trail stop loss, okay, it already gave 168. So, अगर ये हम लोग देखेंगे इसको, ये कहाँ तक है? 180 के ऊपर 196। If a trailing stop loss is hit, don't hold it, okay? If it is not hit, then you can stay put. Otherwise, don't hold it if your trading stop loss is hit. It's more important to protect capital rather than make profits. Good indicator setup. Yeah, why don't you use super trend and swing trading? Swing trading, you can use super trend, na? Super trend and pivots for target.
Okay. See, one stock that we had recommended is Narayan Ridulaya. Narayan Ridulaya is doing very good. We recommended one stock as in first Feb budget day stock pick was PFC. We recommended it at around 370 range, 370 80 range. It went up to 485, 490 range within 3-4 months. Narayan Ridulaya is one stock that we had recommended earlier last year um, during Jan Feb. Then it had given us 2x returns from 900, 1000 levels, I think 1200 levels. It had given almost. See, the selling pressure is so much. If this breaks the doji closing level, it can. Today we have very good selling pressure. Otherwise, these kind of dojis they don't take much time. Like markets don't take much time to reverse from here. Today the doji is strong, but I think the selling pressure is even more strong. In fact, stronger. Those holding again look for 287. Okay, 287. And if it reverses, trail stop loss. डोजी का लो काटने आता है, मैंने देखा है जितने बार भी. So there are n number of instances where this doji is challenged. Lower part of this doji is challenged so many times. So 287 is possible. Once you get 287, 23, 287, 288, you need to book. Okay. Today TCS and other, I think, heavyweights are bringing the market down. $167 again, 169. Again, this low is challenged. 169. Book first target. Book first target now. 171. 172. 180. Let's see 180. 178. Someone was saying, I'm seeing a call side opportunity. Gaurang Patil, isn't it? See what happens if you preempt, or if you think you like market will do all like market will always behave the opposite of whatever you think. If you can learn this, you will make profits. How many times I have seen that there is a doji, strong candle, reversal candle, and next what happens is that the like low of that doji is challenged. Okay, so I had said 287 target lena, and our low is 23,282. So this is done. Okay, 23,287 is done. So next our target should be trail stop loss, and our target should be 23,270, 271, 272.
If it gives okay and if it breaks this high, so your trailing stop loss should be here now. Okay, इसके ऊपर चला गया ना, we have to exit. Trail stop loss, don't make losses in this trade. So TCS made a high of 71.6. Good profits, I think. Did you make profits in the put trade? Or didn't you take it? Like you didn't take it at all? Anybody future type wants to trade in future? Yes, long trade ले सकते हैं ना. You can look for long trades. Just wait. I think we should get the opportunity to, you know, Ambuja Cement. We should get the opportunity to trade, take a long. So our stop loss was somewhere around 23,323. So above that, we would have our trailing stop loss. So maybe 325. So it went up to 321 and then again retracing. Okay. So let's wait for some time. If it goes above 325, we exit. For now, it is taking severe resistance upside. Any upside move is being sold.
How to take double confirmation? So the here only a bullish setup is forming. Okay, this is the best place where market can bounce. This is the best place for from where the market can bounce, because the last time this was the place where market bounced from, and this can be the place where market bounces from once again. Okay, but you need to check. So first confirmation, my first confirmation was, see over here only. For my first confirmation is this doji formed at 130. Okay, 130 candle, 5 minutes doji with good volumes. That is one signal. Okay, not confirmation. One signal. The next signal is this inducement candle breaking below day low, yet retracing. कुछ buyers, कुछ sellers तो यहाँ पे trap हुआ है. So अगर if you see, so we have buyers here, and if you see we have buyers here. We need to see how powerful buyers these are. As of now, यहाँ पे दिख रहा है both these candles have good volumes. That means there are strong buyers over here. Now let's see whether market responds heavy sellers from this level, or responds to buyers over here, or people have exited their position. So this is a signal already that यहाँ से market reverse हो सकता है, but we have to wait. सबसे बेस्ट सेटअप होगा अगर नीचे आता है एंड देन इट स्वीप्स अगेन फॉर लिक्विडिटी एंड देन मूव्स अप. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. How many of you want to take a bullish trade from here? Anyone wants a bullish trade from here? Okay. Why do you need bullish trades in a bearish market? Okay, let's see if we get your bullish trade. Let's go with 23,300 CE. 23,300 CE. Okay, 23,300 CE. Let's see from here. Okay. बहुत bearish sentiment है, बहुत ज़्यादा. If we are taking 23,300 CE, okay, 23,300 CE will enter when? Let's see. We'll enter above 190. Okay, we'll enter above 190. 23,300 CE. Let's see. 10 points stop loss to keep above 190. Above 190, I think we should get a bit of momentum, positive momentum. You're playing both sides. If your view is bullish, then only you should go to politics. You should join politics like Thalapati.
there is very good consolidation over here. अगर मार्केट ऊपर खींचता है ना तो अच्छा खींचेगा. 347 आई एम लुकिंग एट फ्रॉम हियर. इफ मार्केट 347.20 में टच कर सकता है एंड दिस लेवल आल्सो टच कर सकता है. These one फ्यूचर ट्रेड वो कर सकते हैं हम लोग. लॉट साइज कितने का है इसका? 1050 लॉट साइज. Anybody wants to trade in futures? Anybody wants to trade in futures? Ambuja Cement, there is a very good opportunity in Ambuja Cement. Okay. Ambuja Cement futures below 415.5. The target will be 414.35 and 410.80. Our stop loss will be here. $23,300 moving, okay. $23,300 moving. Okay, let's enter 23,300 CE at 180 to 185. Our stop loss will be at 165. 23,300 CE at 180, 185 range or near 180. Your stop loss could be 165. Let's see if we get a good move upside. Yes, come on, let's see. 185. $334 take first target. Okay, 23,334 should be your first target level. 23,334 and 335 will be your first target level. Second target will be 347 to 350 levels. $188, $189, $190, $191. Book first target. $193. Book first target. Second will be 347 to 350. This will be now trail stop loss, everyone. Trail stop loss at 175. Don't take loss.
I hope everyone got profits. 193 was the high. Let me see. Let me check. 194 was the high. Okay. I hope everyone got first target. It's very difficult for market to sustain higher levels. Ambuja Cement Futures short below 415.5. Okay. For targets of 414.35 or 45 and 410. Okay, once again moving upside. So our next target will be 357 to 350, 347 to 350. So we got profits both on the CE side and the PE side as well. Okay. गुड वॉल्यूम्स क्रीपिंग ऊपर शूट करता है तो अच्छा शूट करेगा ऊपर. लेकिन अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आता है तो मार्केट कैन स्लिप मोर.
193, 194, we are heading towards a good move, I think. 346, 45 to 354. Okay, this might be the level for you to book your second targets. Hmm. Okay, Fortis, there is an opportunity to go long in Fortis. Okay.
Nifty is still consolidating, trying to make a move upside, but it's facing quite a bit of resistance because see, Nifty change the trend will change only when it is trading above 20 MA. Okay, when it starts trading over 20 MA on 5 minutes chart, Nifty you can be a bit of you can have a bit of confidence that it is actually trying to change its trend. Now, on a trending day, what happens when the market is in a bearish trend? What happens is that whenever it touches the 20 MA, market tends to fall. Okay, so our trailing stop loss is gone over here. You can re-enter the trade 23,300 CE. You can re-enter. Okay, 23,300 CE. You can re-enter. $85, 185. Let's see if it moves up. Now here is a stop loss. Okay, this is your stop loss.
We are close to the stop loss level. So if this level is breached, you exit, okay? If this level is breached, you exit. Still not breached. Breached now. Exit everyone at 171, 172. You exit. This is the new order block. Okay. And this is the order block again. This is the new one. Okay. So we'll have one last trade now. Okay. Fortis didn't activate. So we'll have one last trade. If we get an opportunity, let's see. I'll be doing it every day from now on.
So enter at 175 to 180 range, okay? And hold. So first target I am marking over here. That will be your first target. Levels. If it has to move now, it will move. Otherwise, it will it will not recover from here. Okay, so let's see. Last trade of the day, okay? Please don't forget to subscribe to the channel, like the video, share it with others, friends and family, spread the word, join my free trading community at Stocks and Strategies. I have shared the link with you over here and I'm sharing it again, okay? So it's now 183. So this is the third time I'm sharing it. Please do join this group and become a part of my investing community. 185, 186, very good 10 points. Safers, book, partial profits. Trail stop loss at 170. Let's see a big move. 186, 187, 188, 189, 90, 91, 91. Very good move. Let's see if we get further. Our first target is around 340, 341. Okay. Let's see if we get another move. Hope you are enjoying this. प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे. अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करना, ठीक है? $189 पे है अभी या 190. So again close to 15 points. No comments from you guys. Whether you're enjoying it or not, whether you're getting profits or not, I'm not able to understand, okay? I'll be coming live in the evening also. If you want to trade with me in communities, let me know, okay? Do join the session. And if you have any queries, you can also join the session and ask your queries. I'll be going live for crude commodity trading and your queries.
So we got good profits, right? First the PE trade, the TCS stock option trade, and then we have a small loss, 8 to 9 points of loss in the C 23,300 C trade, and now a big profit, like 15 points plus profit. And we have got our first target, 340, our first target, we have got it. $194, $195. How good is that? Tell me. $198. अब तक ये सब आप लोग रील्स में देखते थे, है ना? जो YouTube रील्स में आते थे ना, शो करता था, रियल में कभी नहीं देखा, ये देख लो अभी. Don't worry, just keep trailing stop loss for the targets, okay? 360 is our next target, but it will receive some impact on 353. Our final target is 376. It can go beyond that also, but you just keep trailing the sell, okay? Don't worry. 355 में थोड़ा सा 355 के पास थोड़ा सा ये ऑर्डर ब्लॉक पहले का है, तो इसमें थोड़ा सा नानुकुर करेगा मार्केट, बट अदरवाइज थोड़ा सा नीचे भी आएगा तो ऊपर निकल जाएगा, मुझे लगता है. $198, guys. 199, 200. Blast, 202. Second target achieved. $361. 360 was our second target. It is achieved. So 376 is our next target. $204. How good is that? 204. 206. Guys, you must share this video with everyone, like family, friends, whoever you know is trading. Please spread the word, okay? So 206 we made a high. So we made a high of 206. 206 from 175. Fortis can get activated, okay? Fortis can get activated. We are not done yet in the Nifty trade. Our final target remains 376. So we got 365. Okay. And if like we get further movement, then I think this order block is possible. Over here, 396 is also possible. This is also possible, okay? हाँ, और यहाँ तक भी पहुँच सकता है.
Generally we get around 1 is to 4, 1 is to 6 risk reward ratio, but today there is a heavy sell off day. It's a heavy sell off day. So every level is being tested, and every level is like a rock solid resistance. Okay, then I'll take your leave. So I think I hope you have enjoyed this session. We'll meet again on in the evening. If you come live, like if you come and join me on the live session, we can trade on commodities. We can discuss stocks. We can discuss market. Right. Have a nice day. Goodbye. In this trade, our targets are left open. Okay, still there is a move left to 376 and 397. We can get more than that. It can happen only if you trail your stop loss, right? Market trend is changing, so if you trail your stop loss, we can still get those targets, right? Okay, then, bye bye. See you in the evening.